Hey guys, welcome back to my channel once again. And in the previous video, I have covered WTO, that is World Trade Organization. In this particular video, as I promised, I will be covering World Bank. Okay, so World Bank में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले just like we did it for WTO. Okay, now this is gonna be a second video for chapter number 8. I will be coming up with the third video and the last video that will be IMF. Okay, now World Bank में सबसे पहले समझना पड़ेगा आखिर World Bank करता क्या है, why it has been set up, when it has been set up, what was it objective for, why, मतलब क्यों क्यों सेटअप हुआ, मतलब उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, उसके पीछे रीजंस क्या थे, क्यों एक वर्ल्ड बैंक की जरूरत पड़ी, क्यों हर कंट्री में जो बैंक एग्जिस्ट करते हैं व्हाई वर दे नॉट इनफ फॉर अस. प्रिंसिपल्स, देर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स. जब भी हम कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं हम हमेशा किसी प्रिंसिपल के ऊपर बात करते हैं जिनके ऊपर वो बेस्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ we were talking about WTO, we talked about certain principles. Now you need to remember one shortcut for that particular thing. Write it in the comment section. Do you still remember that mnemonic I mentioned? And what were the two mnemonic? What was the one Bollywood movie context that I gave you for the WTO? Now, functions padenge, organization structure, resources, and IMF versus World Bank. For this particular part, I would actually suggest you to come back to this particular video after watching IMF video. क्यों? क्योंकि जब हमें दोनों चीजें पता होती है for the point of differences, it becomes very easy to actually differentiate, to actually understand कि वो difference क्या कहना चाह रहे हैं. For a context purpose, I'll also post this particular difference in the IMF video too. नाउ अगर मैं डीयू की बात करूं, अगर मैं बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों की बात करूं, तो पेपर में ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट नोट आता है. दैट इज व्हाई आई एम कवरिंग दीज टॉपिक्स इन अ शॉर्ट वीडियोस, जिससे आप फटाफट से 10 मिनट मैक्सिमम लगा के यू कैन जस्ट फिनिश ऑफ with one topic and you will have enough knowledge to write a short note about it. ठीक है? So I have picked it for that particular purpose, but in case you are not a DU student and still watching it, you will get enough knowledge about World Bank, and trust me, this is very good video for the knowledge purpose. Before I move forward, please don't forget to subscribe to my channel. It's extremely important and it's the only one thing that I actually asked for. Okay. नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू द ऑब्जेक्टिव, थोड़ा वर्ल्ड बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा उसके हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं. वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. नाउ फ्रॉम द actually from name of the organization, I can make out it is a bank, it is a financial institution. बैंक जैसे हमारा HDFC बैंक, SBI बैंक होता है जो हमें लोन्स प्रोवाइड करता है, ग्रांट्स प्रोवाइड करता है. Similarly, this particular banks work upon, but it is on the international level. It is between different countries. Let's say India है, ठीक है? अब India, or in fact, let's say take a low income country, even less than India, let's say Pakistan as of now, or in fact Nepal or Bangladesh, small countries. Okay? So इसमें क्या होता है, कभी कभी वर्ल्ड बैंक को इंटरफेयर करना पड़ता है एंड दे नीड टू ग्रांट लोन फॉर देयर डेवलपमेंट पर्पस सो दैट वो कंट्रीज भी डेवलप कर पाए. ठीक है? फॉर सच डेवलपमेंट पर्पसेस वर्ल्ड बैंक एक्चुअली प्रोवाइड्स यू विद लोन्स, with grants, with many other services in order to promote growth in your country. Okay? सो वर्ल्ड बैंक की जब मैं बात करती हूँ, मैं कंट्रीज की बात करती हूँ, मैं इंटरनेशनल लोन्स की बात करती हूँ, मैं कोई भी डोमेस्टिक लेवल पे बात नहीं कर रही हूँ. नाउ व्हाई such bank was actually came into existence? First of all, for the economic development. As I mentioned, low and middle income countries में development के लिए जब loans grant होते हैं, first वो हो गया, जिसकी वजह से पॉवर्टी रिड्यूस होती है. व्हाई? एज अ कंपनी प्रोग्रेस, एज कंपनी डेवलप्स, सॉरी नॉट कंपनी बट कंट्री डेवलप्स,
it actually moves towards a path of development, and finally it reduces the poverty in their country. अब फ्यूचर में इस पर्टिकुलर वीडियो में आई विल बी यूजिंग टर्म IBRD. IBRD stands for इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. ओके, तो वर्ल्ड बैंक को कभी कभी हम IBRD बोलते हैं, और इनफैक्ट कभी कभी क्या, उसका ऑफिशियल नेम ही IBRD है. अब मैम, ये एग्जिस्ट कब हुआ था, एंड व्हाई पीपल केम अप विद द आइडिया, और कंट्रीज केम अप विद द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बैंक? It was actually established in 1944, and in fact ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में स्टैब्लिश हुआ था. एंड द मेन इशू वाज आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने थे हर कंट्री को, especially after World War II, and finally it came into existence. Okay, so the main objective, the main goal, the first goal was to improve the living standard, reduce poverty and economic growth of the countries. कैसे करेगा? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करके, चाहे वो लोन्स में हो, चाहे वो ग्रांट्स में हो, चाहे वो एज अ फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी हो. फाइन. I hope I made myself clear. I hope you are getting an idea why it came into existence, what was the need, what was the main objective. अब हम थोड़ा इस टॉपिक में डीप डाउन जाते हैं. What was the objective? First of all, as I mentioned, मुझे इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करनी होती है फॉर कैपिटल पर्पस, ठीक है, एंड फॉर द प्रोडक्टिव पर्पस. अगर तुम वर्ल्ड बैंक के पास फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंट्री जाती है, दैट सर आई नीड टू रेज मनी फॉर टेररिज्म, नो, it will actually reject, not even listen to you. टेररिज्म और कोई भी इलीगल चीज के लिए ये कभी भी नहीं करती है प्रमोट. इट ओनली एक्चुअली प्रमोट्स फॉर द प्रोडक्टिव पर्पस. ऑब्वियसली अगर अपने पास के बैंक में भी ये बोलोगे जाके कि मुझे टेररिज्म के लिए पैसा चाहिए या मुझे किसी इलीगल बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, ऑफ कोर्स सबसे पहले रिजेक्ट तो करेंगे, तुम्हें जेल और भिजवा देंगे. ठीक है. सेकेंड, प्रमोट फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. मैम, फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और वर्ल्ड बैंक का क्या लेना है? देखो, कभी कभी कुछ कंट्रीज बहुत ही हेजिटेंट होती है कि एक कंट्री में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए. इज इट एक्चुअली सेफ? विल इट एक्चुअली गिव इनफ रिटर्न्स? नॉट इवन रिटर्न्स, क्या मेरा कैपिटल वहां सेफ रहेगा नहीं रहेगा? ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली कंसल्ट टू द वर्ल्ड बैंक. यू कैन एक्चुअली रेफर कि भैया तुम्हारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग क्या ये कंट्री इनफ है, क्या ये कंट्री का ग्रोथ क्या है, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कंट्री. ओके, सो इट एक्चुअली प्रमोट्स फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जहां पे ये सब नहीं हो रहा होता पहले. प्रोवाइड प्राइवेट कैपिटल. नाउ इट एक्ट्स एज अ प्राइवेट कैपिटल जहां पे लेट्स से चाइना को किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पैसे लगाने एंड इट डज नॉट हैव इनफ कैपिटल, सो वर्ल्ड बैंक विल प्रोवाइड the capital to them depending upon whether this particular project is actually fruitful, or will it be actually useful as a country. क्या वो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा, क्या वो एज रिक्वायर्ड है भी नहीं है. ठीक है. हेल्प्स इन मेंटेनिंग बीओपी. ऑफ कोर्स बीओपी में जब डेफिसिट आ जाता है तो सर्टेन एक्सटेंट वर्ल्ड बैंक भी हेल्प करता है. ठीक है, यू कैन एक्चुअली take loan from them. So BOP. Okay, now this was all about what was mentioned in your books. Okay, now let's talk about few objectives जो actual में general में है and मैं समझाना चाहती हूँ. As I mentioned in the introduction, the first objective is to reduce poverty, ending extreme poverty. कुछ countries में अभी भी there are few people living $1.9 पर डे से भी कम. ओके, तो उन कंट्रीज को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, सपोर्ट देता है, सो दैट कुछ पॉवर्टी सर्टेन एक्सटेंट तक उन कंट्रीज में कम हो पाए. ओके, सो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्चुअली एस्टैब्लिशिंग वर्ल्ड बैंक. एंड I hope you remember this. I hope you understand this instead of just cramming everything.
What is the focus of the World Bank? Why? What is the main focus? क्या वो सिर्फ लोन देता है? Now, what is the main focus of the World Bank? वो मतलब कुछ तो फोकस होगा. लेट्स से आज अगर मैं किसी एग्जाम के लिए बैठती हूँ तो मेरा फोकस क्या होता है? या तुम डीयू में पेपर दे रहे हो तो तुम्हारा फोकस क्या है? मैम पेपर पास करने, डिग्री चाहिए, फिर जॉब चाहिए, ये फोकस है. ठीक है. तो सिमिलरली वर्ल्ड बैंक का भी फोकस होता है कि वो क्यों आखिर इतनी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, क्यों इतना फोकस कर रहे हैं, क्यों वो मेंबर से पैसे ले रहे हैं फिर उन्हें दे रहे हैं, मतलब क्या फोकस है, क्या एम है उनका. पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ डिफरेंट नेशंस. डेवलप्ड कंट्रीज बहुत अच्छे हैं, मान लिया मैंने. यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है. They are very good in health and education. But what about the underdeveloped countries? What about the developing countries? उन्हें भी तो support चाहिए. Reduction in poverty, mentioned 100 times. Development in private business. Obviously, country खुद पैसा कितना रेस करेगी अपने ही लोगों से, कभी कभी उसे external sources से भी चाहिए होता है पैसा. And sometimes उन्हें भी in a developing country or in underdeveloped country नहीं मिलता है. ठीक है. Because other countries do not trust them कि dude क्या करे. ठीक है. तो एज अ वर्ल्ड बैंक it actually act as a catalyst to facilitate these private investment, foreign investment in their countries, and they themselves also invest in those countries. Improving standards of living. खुद लॉजिक लगाओ. अगर पॉवर्टी रिड्यूस होगी, ग्रोथ होगी, तो ऑब्वियसली एज एन इंडिविजुअल मेरी स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी. ठीक है. Now, what are the functions of World Bank? What does it actually do? First of all, providing financial resources. Main function World Bank का क्या है? Financial resources provide करना to its member countries. Different financial resources हो सकते हैं. Guarantees की फॉर्म में, grants की फॉर्म में, loans की फॉर्म में. क्यों? क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स उन्हें प्रमोट कर लें. फाइन. फाइनेंसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. वर्ल्ड बैंक बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत सारे लोन्स देता है, बट इट एक्चुअली प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. क्या हो सकते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल योर एग्रीकल्चर, योर एजुकेशन, योर हेल्थ केयर. सो दीज कम अंडर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स and they actually promoted to reduce the poverty, to provide sustainable growth to the country. तो तुम्हें ये लाइन तो हर आंसर में लिखनी है. पॉलिसी एडवाइस एंड टेक्निकल असिस्टेंस. देखो, जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे वो WTO, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो IMF हो, टू सर्टेन एक्सटेंट दे ऑलवेज प्रोवाइड यू विद द असिस्टेंस. ठीक है. सो दैट नॉलेज शेयरिंग हो, टेक्निकल असिस्टेंस मिले, एक्सपर्टीज मिले. ठीक है. अबाउट व्हाट? क्या वो ऐसे करते हैं आउट चाय पे चर्चा करें? ऑफ कोर्स नॉट. दे actually discuss very important issues such as economic policies. कैसी चल रही है, क्या डेवलपमेंट इश्यूज है, कैसे सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है तुम्हारी कंट्री में, कैसे तुम पॉलिसीज इंप्लीमेंट करोगे, क्या न्यू पॉलिसीज आनी चाहिए. ओके. As I have already used this particular word, catalyzing investment, it actually mobilizes your resources. ठीक है. नए नए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो फॉरेन हो, एंड एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट बनाता है तुम्हारी कंट्री में. डेटा एंड रिसर्च. कोई भी बैंक हो, चाहे मैं HDFC बैंक के बारे में बात करूं, वो अपनी रिसर्च, वो अपने पूरे, जब तक उसे तसल्ली नहीं हो जाती वो लोन नहीं देता. सिमिलरली वर्ल्ड बैंक भी बहुत सारा डेटा, बहुत सारी रिसर्च करते हैं बिफोर ग्रांटिंग सच लोन्स. ओके. Now, what are the principles? There are certain principles on which this particular organization works upon, and हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कुछ प्रिंसिपल्स होती है. लेट्स से तुम एक ह्यूमन हो, तुम्हारी भी कुछ प्रिंसिपल्स होती है कि यार ये मेरी, यू नो, यार मैं क्या प्रिंसिपल्स को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे याद नहीं आ रहा है. पॉवर्टी एलिवेशन. ठीक है. रिड्यूस करनी है पॉवर्टी, लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ाना है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है, एंड पुअर सेगमेंट जो एक कंट्री में है उसे कम करना है.
कंट्री ओनरशिप क्या होती है? गवर्नमेंट को वो सपोर्ट करते हैं एंड उनके डेवलपमेंट एजेंडास डिसाइड करते हैं एंड नेशनल स्ट्रैटेजीज डिसाइड करते हैं, सो दैट ये टेलर मेड हो हर एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए। हर कंट्री को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेशन, आई बिलीव इन रिजल्ट। ओके, क्या आउटकम आ रहा है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का या प्रोग्राम का। लेट्स से यू आस्क वर्ल्ड बैंक फॉर $10 million, बट उसका जो इम्पैक्ट है दैट इज वेरी नेग्लिजिबल और दैट इज वेरी स्मॉल। तो ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक विल ऑल्सो कम अप विद एन आर्ग्यूमेंट दैट डूड, the amount that you are asking from us is actually very huge as compared to the impact. Okay, knowledge sharing, it is nothing but another way of saying your assistance, right? So it actually shares knowledge, innovation, learnings। तो वो ट्रेनिंग देते हैं कुछ कंट्रीज को, फैसिलिटेट करती है। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इट बिलीव्स दैट सब कुछ अकाउंटेबल होना चाहिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है वर्ल्ड बैंक का, कैसे वो चीजें इवेल्युएट करती है, चेक कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट वहां का चलता है, एंड सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करती है। एंड इट एक्चुअली प्रमोट्स डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, जितना तुम डिस्क्लोज करोगे रिगार्डिंग योर पॉलिसीज, रिगार्डिंग योर डिसीजंस, उतना ही इजी होगा कि तुम्हें चीजें आसानी से मिले। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो इन अ लोन और लेट्स से यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, ओके, तो तुम्हारे बोर्ड कुछ डिस्क्लोज ही नहीं करना चाहते। यू आर अंडर अ थॉट कि यार दे आर ट्राइंग टू कंसील इंफॉर्मेशन फ्रॉम मी, दे आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग फ्रॉम मी। अगर तुम्हारे दिमाग में ये इमेज आ जाती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल नॉट इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, दैट डूड कुछ तो छुपा रहे हैं ये, कुछ तो दाल में काला है। तो समथिंग लाइक दैट। तो वर्ल्ड बैंक ऑलवेज प्रमोट कि तुम डिस्क्लोजर करो, तुम डिस्कस करो, तुम अच्छे से ट्रांसपेरेंट रहो, जिससे लोगों को भी हिचक ना हो तुम्हें इन्वेस्ट करने की, एंड ऑलवेज गेट फीडबैक्स। फीडबैक्स आर बेस्ट वे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है? नो नीड टू गो इन डिटेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये लिटरली तुम्हारे बुक में इतना ही गिवन है। तो जस्ट अगर आता है, यू कैन जस्ट ड्रॉ विद पेंसिल एंड यू आर डन। Resources, again, this is very, technical language. You can actually skip it, or you can just go through it, or you can just mention it once that yes, World Bank actually divide their resources into three parts. Some part that are allowed for the lending purpose and some that is not allowed for the lending purpose, because अगर वर्ल्ड बैंक सब कुछ ही लेंड कर देगा, सब कुछ ही दे देगा दूसरी मेंबर्स को, दूसरी कंट्रीज को, तो वो खुद अपना सिस्टम कैसे चलाएगा? इट इज अ वर्ल्ड बैंक। तो तुम सोच रहे हो उसका हेडक्वार्टर्स, उसके मेंबर्स, वो खुद कैसे ऑपरेट करेगा, राइट? Again, as I mentioned, IMF and World Bank का ये difference है. I will be putting this slide in the next video too, so that when you read it, तुम दोनों ऑर्गेनाइजेशन को बेटर कंपेयर कर पाओ, बिकॉज अभी तुम्हें सिर्फ वर्ल्ड बैंक पता है। IMF, I am still, I have to still cover that particular topic. So you can read it once, समझ में आए, well and good. नहीं समझ में आए, watch it in next video. Okay, so that's it for the World Bank purpose. Literally, अगर तुम student हो and तुम्हें answer लिखना है, तुम्हें short note लिखना है, this particular knowledge is enough to write short note for an 8 marker or a 10 marker. I don't think इससे ज़्यादा knowledge तुम्हें चाहिए. And as I always make a mind map of everything, just take a snap, just see कि तुम्हें सारे टिक 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 ऐसे कर लो, and just see तुम्हें सारे topics आते हो, and this is to sum up everything that we have covered in this particular chapter. Okay, so I'll give you 5 seconds, you can just take a screenshot, and that's it. See you in the next video. The next video will be around IMF, and we will be covering the particular organization in detail.
So this is my second video in one day only. So I'll try my best to upload third video too. Please provide me with a PDF because I don't have PDF of fourth unit of international business. In case you want videos, provide me with that since by today latest because kal Sunday hai, I can make videos for you guys. So thank you so much. Have a great day. All the best for your exam. Bye bye. Take care.